Hello, you're watching News9 Live. Let's bring you up to speed in the protesting women wrestlers case. In the latest, the Delhi police has agreed to register an FIR against WFI chief Brij Bhushan Saran in sexual harassment case by top women wrestlers. Wrestlers Vinesh Fogat, Bajrang Punia, Sakshi Malik, Ravi Dahiya and Deepak Punia have been protesting against Singh and demanding the government should take action on their complaint. दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है। हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है। तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये था कि हम जब खिलाड़ी इकट्ठे होकर हम एक महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे तो शायद सरकार हमारी सुन लेगी, क्योंकि हम वो खिलाड़ी हैं जब देश में मेडल लेके आते हैं तो हमें उस मोदी जी खुद अपने हाथों से मेडल पहनाते हैं और हमारी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन आज वो नौबत आ रही है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही और इसलिए हमें सभी देशवासी है, कोई राजनीतिक और ना कोई किसी, सभी देशवासी है जिसमें खिलाड़ी हो, सब कोई भी हो, वो हमारे तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। शायद जितना दिल में दर्द आज जंतर मंतर आके हुआ है, शायद दिल में दर्द कभी इतना नहीं हुआ है जितना आज दिल में दर्द हुआ है। मैं कल देख रही थी, मैंने जो हमारे इस देश को पूरी दुनिया में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कल जब मैं उन खिलाड़ियों की टीवी पर बाइट देख रही थी और जब इनकी आंखों से आंसू निकले तो मैंने सोचा कि ये कैसी कठोर दिल सरकार है। ये आंसू देख के तो पत्थर भी पिघल जाएंगे, लेकिन मोदी जी के कान पे जू नहीं रेंग रही है ये आंसू देखकर। आज जब सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप हुआ तो दिल्ली पुलिस की तरफ से मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए और उन्होंने अपीयर होते ही कहा कि जी क्योंकि कंप्लेंट्स से कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, इसलिए हमने फैसला किया कि FIR दर्ज आज ही कर ली जाएगी। तो कोर्ट ने उनका ये बयान रिकॉर्ड कर लिया। ये बयान देने के बाद तुषार मेहता जी ने कहा कि जी इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि ये FIR चाहते थे, FIR हो गई है। हमने इस बात का ऑब्जेक्शन किया क्योंकि कंप्लेंट 21 अप्रैल को दी थी और इंटरनली जो माइनर बच्ची है या जो दूसरी कंप्लेनेंट लड़कियां हैं, उन सबको अप्रोच करने की कोशिश की गई। तो हमने कोर्ट में सील्ड कवर में वो एविडेंस भी दिया, जिससे ये कोर्ट को अल्टीमेटली लगा कि इन कंप्लेनेंट लड़कियों को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। हमने कोर्ट में गुहार लगाई कि जी आप इस केस को डिस्पोज ऑफ ना करें, इसको पेंडिंग रखें और जो ये कंप्लेनेंट लड़कियां हैं इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। Meanwhile, athletics legend and Indian Olympic Association's president PT Usha finds herself in the eye of a storm after she criticized the wrestlers protesting to press for action against WFI chief Brij Bhushan Saran. PT Usha accused the athletes of tarnishing India's image and said they should have come to the IOA rather than taking their fight to the streets. And let's listen to some of the reactions coming in at what PT Usha said.
We are having everything like Athletic Commission, IOA. Whatever they are having feeling, they could have come to us and then it could have been solved. If it is not solving, then they can go to everywhere. But instead of that, they are going straight away to street. It is not good for the sports. It is not at all good for the sports. So we don't want to make any problem for sports people, and we want our athletes to participate in the Asian Games. For that only we are going to already done the ad hoc committee. ये बात सुन के बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। पहले तो हम संविधान अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आए कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने। उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद IOA की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा के सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में। हमारे अंदर से हम खुद लोग पर्सनली फोन कर करके कि प्लीज उनसे हाल चाल पूछो कि मैम सब कुछ ठीक है या नहीं है। उन्होंने एक बार भी क्या, उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें? तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। काफी दुख होता है ऐसी बातें जब PT उषा मैडम ने बोला है, क्योंकि वो खुद एक महिला है और उसके बावजूद IOA के अध्यक्ष भी है और राज्यसभा सांसद भी। अभी विनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीजें कमेटी के सामने बोली। हम उनके पास गए हैं, वो बोल रहे ना हमारे पास आते। 3 महीने पहले हम उन्हीं के पास गए थे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमने मजबूरन यहाँ आना पड़ा। क्योंकि 3 महीने में क्या किया, उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह तो कि भाई सोर्सेज ये बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बताया, ये तो निर्दोष है। वो दोबारा से फेडरेशन को रन कर रहे हैं। वो अपने जहाँ पे खिलाड़ियों ने बोला कि भाई हमें जान से मारवा देगा, उसका भी डर है, लेकिन वो नंदनी में अपना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। जब आई वो कुछ नहीं बोल रहा। जो उनके फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे तोमर जी, उनको सस्पेंड कर रखा, वो मेडल सेरेमनी कर रहे हैं लड़कियों की, तब कुछ नहीं बोला जा रहा। अगर खिलाड़ी अपने हक की आवाज उठा रहे तो उनको अनडिसिप्लिन बोला जा रहा है। खिलाड़ियों को तो हमेशा डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, ना कि अनडिसिप्लिन। It is so sad when a woman icon, PT Usha, says something like this. Let's discuss this, and with those who are actually in the field of sports. Gaurav Bidhuri, boxing champion, who is a bronze medalist in the World Boxing Championship, is now joining us, and also Chandrasekhar Luthra, senior journalist
is joining us. A very warm welcome to both of you. Mr. Bidhuri, what do you make of this? I mean, as a woman, I am very, very hurt, because the thing is that I don't think those protesting women wrestlers have any other agenda other than bringing the guilty to book. And we have heard many stories of how women particularly have been exploited by coaches and several other administrative officers time and time again, Mr. Bidhuri. Ma'am, see, we should look at them like इतने बड़े player okay, they are coming to this level, like जी. they are sitting at Jantar Mantar and they are protesting against it. मतलब what they have faced, they might have tried their best. Means जैसे अभी PT Usha ma'am was saying, like they should reach out to IOA and to other authorities. We means I won't tell you my story, but we athlete we try our best to solve things without creating any issues. Okay. Means we'll go to our federation, to our coaches, to our authorities. When things are not in our favor, they are not acting in our favor, then only people think like, ab kare kya? We come out in front of media, right? Thinking like media will, they will spread our voice and things will happen. But might be in right now, if you see this case, पहले उन्होंने protest किया and things committee बनी, but why things are taking too much time? Okay, 3 महीने हो गए. It's not like 1 week or 2 weeks. So main problem is, okay, they are also doing, means government is also doing their part, and means they protested and they responded to that, but why the decision is taking too much time? Okay, that is the reason they came in front of media and they are now protesting again, because it is not getting solved. No, but the point is PT Usha, you see, forget about that she is the head of Olympic Association, International Olympic Association. She is your peer. She is a senior in the same field. She must have gone to dark, dingy camps. I am not saying that she would have also faced sexual harassment, but एक औरत प्लेयर होते हुए हम सबको मालूम है किस तरह की कंडीशंस होती हैं. मतलब ये कोई छुपा हुआ नहीं है सबसे. छोटे छोटे शहरों से आती हैं ये लड़कियां, अपने सपने लेकर, और सबको पता है कि कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करके दे कम फॉरवर्ड. Don't you think it is really very unfortunate and sad of PT Usha having said something like this, Mr. Bidhuri? Yes, ma'am, definitely. Because see, हमारी sportsmen की life ना बहुत मुश्किल होती है. It looks very easy, like हम वो medal लेके आ गए and we are getting felicitation and all, but it's very tough. बहुत politics होती है. And one person was saying like why they favor or they do politics or they favoritism and all, because they get pressure from upper. There are higher authorities. Right. Main problem is, of course, ma'am also might be knowing like these things are very wrong going on. Okay, they are not solving this case, but of course she's having some boss. Might be, because it's all we are guessing. Okay, might be having someone who is pressurizing us to say something. Okay, because of course she's an athlete. She might be knowing what we go through. Okay, these all are good athletes who are there protesting. And so basically, Mr. Bidhuri, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव होगा किसी कारण, उस कारण शायद वो ऐसा कह रही हूँ. मैं आपके पास वापस आती हूँ. Mr. Chandrasekhar Luthra, who is a senior journalist, is also joining us on the show. Mr. Luthra, what is this? A case of being more loyal than the king? Is there so much pressure on PT Usha that she forgets the gender that she belongs to, and also that she was a sports person, a national icon for all of us, for having said, why did they go to Jantar Mantar? They could have come to IOA. This is bringing, shame to the nation. What has nation got to do with women who are sexually harassed? हर चीज को जोड़ दीजिए nationalism के साथ. अजीब है तो. Well, this is a new India, I've never seen this kind of situation in my almost 30 years career. And but this is a political signal also that has been passed to all the people, 140 crore people, that if you come up with any such allegations against any of your Raja, king, because these people have become kings, they are behaving like kings. If you kill somebody with your Thar or with your Jeep, and the minister or the MOS in whom will not will be asked to resign. Rather, he'll be given protection, and rather he will be used as political tool. And same as with the PT Usha. She was the first woman icon for India. Yes. I still remember we were, in schools when she lost that, bronze medal by whisker of a second. And we all cried. Look at
Yes, we all cried. Yes. I remember I was in 10th class or 11th class at that point of time. And we all cried. But now look at the kind of political pressure that they You have know, been Mr. facing. Luthra, Just because because, you've seen it at such close quarters, I want to ask you something. I was just telling Mr. Biduri, we all know what goes on. I am not picking on the sports world at all. हर जगह होता है ये. We are talking today about PT Usha. Having said this, that why is it that they went and protested in Jantar Mantar? They could have come to me. But the point is, these girls were helpless. 3 months they wait for the committee's report. Nothing comes out of it. There is complete silence. It's as if nothing has happened. But we know. I think you should please tell me. Don't you think it's a very well kept secret that these kind of allegations happen time and time again? You remember the case of Haryana Sports Minister Sandeep Singh? Then what about Alex Ambrose, this under 17 football player, coach, R.K. Sharma, who was the cycling coach? There are at least 20,000 cases in front of me. and don't forget, recently, only 1 month back or something, one woman also wrote to BCCI Secretary Jayasha and President about Arun Jaitley, late Arun Jaitley's son, about the same sexual harassment case in DDCA. She has written at least 2 or 3 complaints and the emails are with me, but no action has been taken by the BCCI. So this is New India, and this is not the first time that we are hearing this kind of blames or the situation from the women athlete. I have seen in my 30-year career there were so many instances, but they were all brushed under the carpet. And this is right now, and look at how Sports Minister Mr. Anurag Thakur has been behaving, as if they are not just putting pressure on these women to call off their education. And last time also, I was there at 12 o'clock in the night at the Jantar Mantar. Last time when Minister came to Jantar Mantar and asked them to call off this thing. What happened there? It was only pressure. Yes, we are forming this committee. Nobody was agreeing to those names, including Mary Com. They are all political stooges. Let me tell you this. Mary Com, PT Usha, they are only taking advantages of their proximity to government. Nobody has any kind of belief in these. Our icons for that matter. 5-time world champion, Olympic medalist, but nobody has that belief in that. Let me come because back they to you. Understand. Yeah, you're making some very interesting points. Mr. Biduri, tell me something. Already these icons have medals, international recognition. They have everything. They are treated like gods. They are given jobs. They are celebrities. They are on covers of magazines. What is the need to be a political parrot is something which really I don't understand. Retirement ka power? What is it? Ma'am, see, we Indian athletes, we are an athlete, we are an icon only जब तक हम medal ला रहे हैं. Once we stop performing, or it is just in the field of sports, we are an icon. Otherwise, no one respects us. It's like, of course, वो आपकी मतलब अगर आप हमें इज्जत दे रहे हो, it's your good, means it's your good behavior, ma'am. Otherwise, हम athletes, we perform our best at our world level. But when things come, when we need something, when we need support, we get nothing. It's the harsh reality, ma'am. इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, it's just because nothing is coming up on their way. They tried their best. जो बोला जा रहा है कि you should come in front of the government, IOA या आप पहले complain करो या आप ये सब करो. They have tried their all level best. तब जाके they have come to this level, ma'am. And Mary Com Didi, she is a legend, of course. And I'm again saying, like I told you about PT Usha, ma'am, it's all about pressure from higher authorities, ma'am, because they can't go against anyone. But yes, they should at least, if not go against their government, but they should speak for. Yeah, Mr. Biduri, we have yet another icon joining us. This is Karnam Malleshwari, who is a retired, of course, Indian weightlifter, first Indian woman to win a medal at the Olympics in 2020. Miss Malleshwari garu, how are you? Can you hear me? Yeah. Thank you so much. Fine. Tell me something. What is your first reaction to PT Usha? Saying something like this to peers. After all of you are sisters in a way, isn't that right? Because all of you are sportswomen. They are protesting. For PT Usha to have said something like this, what is your first reaction, ma'am? देखिए
एक्चुअली इस तरीके की कोई चीज होती है तो काफी सेंसिटिव है, तो इसमें अच्छी तरह जांच होना चाहिए और जो भी अगर दोषी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। देखिए, एक तरफ हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बच्चे, अब लड़कियां, अब देखिए सिडनी ओलंपिक में मेरा एकमात्र मेडल था, उसके बाद कितनी सारी लड़कियों ने मेडल जीता है। अगर मैन की रेशो में देखो तो लड़कियां ज्यादा ओलंपिक मेडल जीती है, तो उनकी सपोर्ट तो करना ही चाहिए। और अगर उनके साथ साथ अगर ऐसे कुछ होता है तो इस वक्त जांच होना चाहिए। जी मल्लेश्वरी जी, ये बताइए कि पीटी उषा जी जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं, तो उनकी तरफ से ये जो आपने कहा सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत के आती हैं, आपको क्या लगता है कोई राजनीतिक दबाव होगा पीटी उषा जी के ऊपर, या इस मसले को वो एक अलग ढंग से देखती? देखिए, उनका अभी मैंने वो पढ़ा था तो उन्होंने यही कहा कि भाई दो कमेटी बनाई गई, तो ये कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया। अभी हमारा जो ओलंपिक एसोसिएशन का जो रिपोर्ट है अभी सबमिट करना बाकी है, तो इनको थोड़ा वेट करना चाहिए यार, लिखा तो। लेकिन हमें थोड़ा ये भी सोचना पड़ेगा कि जो लड़कियों ने कंप्लेंट किया उसमें 16 साल की लड़की भी है, नाबालिग लड़की भी है, तो उनकी मनोस्थिति कैसी है, उनका क्या सिचुएशन है, वो किस उससे गुजर रहे हैं, उनका भी तो हमने सोचना चाहिए। ये मेरा अपना निजी राय है। जी, तो आपको क्या, देखिए दूसरी बात मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो सारा मसला है, पहले कंप्लेंट हुई, उसके बाद फिर कमेटी की रिपोर्ट, कहा गया कि आप वेट तो कीजिए। अब इन लड़कियों ने 3 महीने इंतज़ार किया लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद आप देखिए कि तभी ये लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो ये कह देना कि आप वेट करो, हमारे पास आओ, आप क्यों जाके जंतर मंतर पे बैठे हो, आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत है? कब तक इंतजार करेगा कोई जब आपके देश के लिए वो मेडल्स लाके देता है आपको? देखिए, ऐसा है, मैं ये भी एक और पॉइंट भी इसमें बोलना चाहती हूँ कि जो कमेटी बनती है जी, उसमें कितनी वुमेन इन्वॉल्व है। अगर कोई लड़की के साथ कुछ हुआ भी है, किसी मेल मेंबर के सामने वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी बोलने के लिए जितना फीमेल के साथ वो खुल के बोल सकती है। हमारा ये भी एक प्रॉब्लम है, जितने भी हमारे फेडरेशन से सारे ही मेल मेंबर्स ही है। अगर किसी बच्ची को कोई तकलीफ होती है तो वो किससे जाके शेयर करे, किसको जाके बताए? हाँ, लेकिन ये मेरी कौम जी के नीचे है ना ये कमेटी, जितना हमें पता है। तो मेरी कौम जी के नीचे ये कमेटी गठित करी गई, तो वो तो औरत है, वो भी आपके साथ हैं, मतलब आप जैसे उन लोगों ने भी बहुत लड़ाई करके ऊपर आए हैं वो लोग। इंडिया को दे हैव मेड इंडिया प्राउड। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो तो औरत हैं, यहाँ पीटी उषा भी औरत हैं। तो देखिए ना, मैं मेरी कौम जी के ऊपर कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट रिलीज नहीं की, चलिए, जिसके कारण लड़कियां बैठ गई जंतर मंतर में। लेकिन जो पीटी उषा जी ने कहा, आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत है? शायद उनका अपना सोच होगा कि उनको लगा होगा कि भी मेरा कमेटी का अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ तो उसका इंतजार करना चाहिए, शायद इसलिए उन्होंने ऐसे बोला। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल मल्लेश्वरी जी कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमसे ये बातें की। थैंक यू सो मच। Let me go to Chandrasekhar Luthra yet again and speak more on this issue. So you heard what Karnam Malleshwari said. You're raising your hand. Go ahead, Mr. Luthra. Yeah. Basically, this is a lie that has been spread by this. Even before they sat on Dharna on 21st, we were given an impression to all the journalists, not just me or or to selective one, but everyone, that there was nothing that has come up that has come against Mr. Brij Bhushan Saran, and there was almost a kind of unanimity in the sense in spreading the rumors that all these athletes were at wrong, and there was nothing that has come against them, and no action will be taken. And we were also told in a very subtle way that let his tenure be over because this is getting over. He has already ruled for 12 years, and in June, mid-June somewhere, there is an election, and his son will take over. What is the secret there? Even now, if he goes, his son will take over.
there will be no change in this federation, let me tell you. And all these athletes, somebody was saying that they are not performing now, but that's a wrong thing. When they sat on Dharna in January, if you remember, 18 January. True. Vinesh was world number 1 or world number 2. Bajrang was a current champion. Commonwealth, Olympic, they are all medalists, current champions. No, but anyway, their ranking was almost in the top 5 right. In world ranking. Yeah, but and now because they have not participated, that's how their ranking has but gone Mr. down. Luthra, And the next 1 or 2. I don't understand what has that got to do with the price of onions. I mean, whether I am, absolutely. I mean, I could be retired. I'm protesting because it's happened. You know, a sexual harassment. That's what even in normal, I mean, not athletes, but other women are said. Oh, why didn't you protest 10 years ago? You kept quiet. अब आप बड़ा जल्दी बोल रही हैं. See, you are no one to tell me when to speak up. Maybe, you know, so I think it is completely a ridiculous argument to say that they are, but like you said, Vinesh was playing at that time. Yes, Bajrang, Vinesh, Sakshi, all are playing members. And because they have missed these 2 tournaments, tournaments, what ranked tournaments. That's how their ranking has gone down. And in next 2-3 months, they'll be out of this. They have to qualify for every tournament. So that is a pity, I would say, because of the callosity of this federation and the sports ministry that they are not taking action. These athletes are suffering. And also, let me tell you, there are Asian Championship that is coming up. If they don't participate there, obviously, which is very remote, chances now, then we are going to miss at least 2 of the medals. All this Bajrang and Vinesh, they are the medal contenders, and not just medal, it's the gold medal contenders. So in a way, it's a pity. But yes, let me tell you also, Brij Bhushan Singh, that's not a secret from anyone. He's a goon. He's a complete Bahubali. I still remember that 2016 Rio de Janeiro, Olympics. On the day when Sakshi won the bronze medal, the first bronze that India got, we were all blank till almost 10-12 days. We were actually wondering whether we are going to get any medal. And only 2 girls have got us medals in that particular 2016 Olympic. And first was Sakshi. The day she won, she was celebrating, she was coming to us, she was running towards us just to speak to media because she was a star of the day. And suddenly when she started speaking without wishing or without going and paying her respect to Brij Bhushan Saran Singh, I remember she was given such a verbal bashing that she was literally into tears. Before she got medal, she was literally crying there. We wrote on that particular day how she was, how Mr. Brij Bhushan behaved with her. But nobody is there, And because of him, we lost a medal also. If you remember that Sushil controversy, he was the one who was still saying that we are going to get this. Right, there is some network issue with Mr. Luthra's connection there. We'll go back to him if we get him back in time. Meanwhile, Mr. Biduri, you tell me something. A lot of voices are now coming to the fore. They are saying that PT Usha should just apologize. What do you think? Yeah, she should, like I told you before also, if she is not favoring, she should not go against, because what they are protesting is not wrong, okay? What all that happened is not a decided decision abhi nahi aaya, but what they are protesting for, she should respect it. Like being an athlete, abhi itne sare important games aane wale hain. We're going to come Olympic qualifiers aane wale hain, and even after that they are coming here and protesting. Just imagine how tough would be for them if they are coming here at this particular point of time. So she should respect that. If they are coming here at this point of time, there should be something. There should be some big reason. That's why they are here. So she should not apologize, but she should say, like, I am in favor of you. Let's wait for the decision to come. She should say something like that or some means. Right. I mean, Mr. Biduri, also the other thing is that about this entire sexual harassment thing, it should never happen. Whatever the situation, whatever the condition, it should not happen. But when it starts happening, because the young players, they say that they don't want to open their mouths. What if they don't get opportunity to play in big national games or even international games? They tolerate a lot. Mr. Biduri, do you think that is true? Ma'am, this is a harsh reality of sports, ma'am. I am on a verge of leaving sports just because of all this politics and all. In 2017, I was a world medalist, ma'am.
2018, I was not even allowed to give trials for Asian Games and Commonwealth Games. 2019, I was not allowed to give trials for my Olympic qualifications and all. And I was keeping quiet, just कि भाई अभी आने वाले competition है, चलो ये मौका I missed. If I raise my voice, I'll go out of, means no one will favor me then. अभी तो कोई कर ही नहीं रहा है, but वो और कर दिया then तो no one will be in my support. In 2019, when no one was there for me, then I came out in front of media thinking कुछ होगा, but nothing has happened. तो तब से मैं भी I'm keeping quiet because कुछ नहीं होने वाला है. This was the only step a person can take जब जाके उसकी बातें सुनेंगी. It's the protest, man. Otherwise 3-4 महीने ये भी रुक के आए हुए हैं. Nothing has happened. But let's hope that, you know, the next time this kind of an incident does not happen. And I would request as a woman to PT Usha that I wish she could just take back her words and stand with her sisters who are fighting an endless battle. Thanks so much, Mr. Luthra, and also Mr. Budiri, for joining us on this debate. Thank you indeed. And for all the other news and analysis, keep watching News9 Live.